Hello, welcome to Virtual Learning Network. Business Mathematics, Session number 3, Single Trade Discount. The topic to be covered in this session: Single Trade Discount, key terms, product flow, price flow, examples, trade discount series, the net decimal equivalent, cash discount and sales terms, interpret and apply EOM, that means end of month terms. Single trade discount. Find the trade discount using single trade discount rate. Find net price using trade discount. Key terms: suggested retail price, catalog price, list price. 3 common terms for the price which the manufacturer suggests an item be sold to be the consumer. Trade discount: the amount of discount that the wholesaler or retailer receive of the list price or the difference between the list price and the net price. ट्रेड डिस्काउंट जनरली व्यापारिक डिस्काउंट होता है जब हम एक ह्यूज क्वांटिटी परचेज करते हैं तो ऑन द स्पॉट ट्रेडर जो है आपको डिस्काउंट देता है या परचेजर को डिस्काउंट देता है फॉर बल्क क्वांटिटी ऑफ परचेज के लिए. Then net price, the price the manufacturer or retailer pays or the list price minus the trade discount is known as net price. Discount rate, a percentage of list price is known as discount rate. Most probably हम 1%, 2%, 3% जैसा भी हमारा आपस में एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट रेट को डिफाइन करते हैं. इसके बाद प्रोडक्ट जो फ्लो होता है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, लिस्ट प्राइस, नेट प्राइस जो फ्लो होते हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देन होलसेलर नेट प्राइस, रिटेलर ऑल्सो नेट प्राइस एंड कंज्यूमर एट लास्ट पेड द लिस्ट प्राइस. सपोज द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 20, देन होलसेलर pays rupees 40, then wholesaler sell to the product to the retailer at rupees 56 and retailer pays to the consumer
rupees 80. So these are the difference between the manufacturing cost up to the end of consumer. So जो बीच का जो मुनाफा है इसको हम क्या कहेंगे, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वैल्यू एडिशन कहते हैं इसे. ये वैल्यू एडिशन है और इसी के इस कंसेप्ट को कम करने के लिए एक हमारे मार्केट के अंदर नया कंसेप्ट आया है जिसको हम रिटेल मार्केटिंग कहते हैं. एंड the off list price 30% to the retailer and 50% to the wholesaler. How to find the trade discount? Using a single trade discount rate, identify the single discount rate and the list price, then multiply the list price by the single discount rate. Trade discount equal to rate multiply list price equal to absolute amount. So trade discount equal to rate into the list price, and now it is shown by the example. Find the trade discount for a CD players that retails at rupees 120 and has a trade discount rate of 35%. So the trade discount equal to 120, that is a cost price, and 35 by 100 which equal to 0.35. Then the total discount earned by the purchaser rupees 42. So now he is able to purchase the CD player by rupees 120 minus 42, which is equal to rupees 78. That the wholesaler or retailer will not pay by 42 of the rupees 120 list price. Find the trade discount for a rung that list for rupees 290 and has a trade discount 30%. So the trade discount is 290 multiply 30 by 100, which is equal to 87. And find the trade discount for styling gel that list for rupees 18 and has a trade discount 15%. So the trader is sell out to the customers below the 15% of rupees 80, which is equal to 2.70. So using the trade discount, identify the list price and the trade discount and subtract the trade discount from the list price to getting the total sales value at the hand of sellers. So net price is equal to list price minus trade discount. Look at this example. Find the net price of a desk that lists for rupees 320 and has a trade discount of 30%. So at the first stage to calculate the trade discount at rupees 320 multiply 30 by 100. So the trade discount is equal to rupees 96, and net price is equal to list price minus trade discount. So it can be calculated as net price equal to 320 minus 96 equal to 224. You can practice this exercise by taking various examples to determine the value of either discount or list price or net price or whatever the prices they are engaging to the calculation of these one. So find the net price of the camera that list for rupees 240. That means कैमरे का जो लिस्ट प्राइस है 240 रुपये है, हैज़ ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 45% और 45% के डिस्काउंट पर मिल रहा है. तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं. ट्रेड डिस्काउंट निकालने के लिए वी हैव यूज द फॉर्मूला गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल एज स्लाइड्स ऑल्सो, like 240, that means net total price or list price of the camera multiply discount rate. So 240 multiply 45%, that means 240 multiply 45 by 100. So it can be calculated 108. 108 is given here as 108 is a
discount. So the net price equal to list price, that means 240 minus 108 which is equal to 132. जिस कैमरे पर टोटल रेट जो है 240 रुपीज़ लिखा हुआ है वो अब इस डिस्काउंट रेट के अकॉर्डिंग आपको 132 रुपीज़ में मिलेगा. Another example, find the net price of a PCO table that lists for rupees 460 and has a trade discount of 20%. तो पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस 460 मल्टीप्लाई 20 by 100. So you can get or you can able to get rupees 92 as discount. So net price can be calculated as 460 minus 92 which is equal to 368. Find the net price using the complement of the single trade discount rate, complement of percent, the difference between 100% and the given percent. For example, sometimes the problem is given here like the complement of 30% is 70%. So how can you calculate the complement of 55% is 45%? That means the sum of both the percentage equal to 100. क्योंकि जहाँ पर कोई भी थिंग्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो 100% लेकर के चलते हैं. अगर 30% आपका डिस्काउंट है तो नेट प्राइस कितना होगा, 70% होगा. 55% अगर आपका डिस्काउंट है तो नेट प्राइस 45% होगा. 45% डिस्काउंट है तो नेट प्राइस 55% होगा. तो इस तरह से कंप्लीमेंट्री लाइक 5% अगर आपका डिस्काउंट दिया जाता है तो 95% आपकी वैल्यू होगी. अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो इट विल बिकम द 100 और इक्वल टू द कंप्लीमेंट प्राइस. सो फाइंड द कंप्लीमेंट, सबट्रैक्ट द सिंगल ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 100. मल्टीप्लाई द लिस्ट प्राइस बाय द कंप्लीमेंट ऑफ द सिंगल ट्रेड डिस्काउंट. नंबर 3, टेकिंग द एग्जाम्पल, फाइंड द नेट प्राइस ऑफ ए कॉफी मार्केट दैट लिस्ट प्राइस फॉर ₹20 and has a trade discount rate of 20%. So you can 20%, the complement is 80% of the net price. So you can calculate the net price by using 20 multiply 0.80, यानी 16 रुपीज़ आपका जो है कॉफ़ी के प्राइस होंगे. लाइक 80% इज द कंप्लीमेंट ऑफ 20%. सो नेट प्राइस इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.80. 0.80 क्यों आया है? इट इज बिकॉज द कंप्लीमेंट ऑफ 20% इज 80% and the value of 80% equal to 80 by 100. So we can write as this form 0.80. So by calculating the net price, ₹20 is the list price, multiply 0.80 is a complementary price. So the coffee can be available in the market at ₹16 per cups. And another example of same kind, like find the net price of a set of golf club that list for ₹1500 and has a trade discount of 15%. Okay, so at first we have calculated the complement of ₹15%. If you have given the discount of 15%, then the cost price will be 100 minus 15%, which is equal to 85%. So the value of or net price of the golf club sets equal to 1500 multiply 0.85, which is equal to ₹1275. Another example for same kind, find the net price of a bicycle that list for ₹102. That means bicycle का जो लिस्ट प्राइस है वो 102 रुपये है and has a trade discount of 30%. That means the complement of it is 70%, यानी 100 minus 30%, 70%. And then the value of this one is calculated by using the list price multiply the complement price.
दैट मीन्स 102 मल्टीप्लाई 0.70 विच इज इक्वल टू 71 रुपीज़ 40 पैसे. And another different kind of things or series of discount, like find the net price applying a trade discount and using the net decimal equivalent. Find the trade discount applying a trade discount series and using the single discount equivalent. So these are different things. Next one, trade discount series or chain discount. Additional discount that are deducted one after another from the list price. It can be possible in the market. Reason for use discount series include to encourage volume of purchase. हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट जो देते हैं, डिस्काउंट इज काइंड ऑफ इंसेंटिव टू द बायर्स, कि बायर्स को हम इंसेंटिव देना चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हमसे परचेज करें. तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ प्रलोभन से उसको देने होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रेटेजी. सो इनकरेज वॉल्यूम ऑफ द परचेज हम इसको कह सकते हैं. एंड टू प्रमोट स्पेशल और सीजनल आइटम्स, इसको हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो स्पेशल आइटम्स होते हैं उनको प्रमोट करना, या सीजनल आइटम्स होते हैं उनको प्रमोट करना, लाइक एज कॉटन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स, दे आर सीजनल, लाइक अम्ब्रेलाज ऑल्सो, दे आर सीजनल. तो इनकी सेल बढ़ाने के लिए हम जो है स्पेशल काइंड्स के प्रलोभन देते हैं कंज्यूमर के लिए, प्राइस कम करने का प्रलोभन देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकें और सेल को इंक्रीज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके. टू एंटेस ए न्यू क्लाइंट, या और हमारा एक पर्पज होता है कि हम नए जो कस्टमर्स हैं, पुराने तो हमारे हैं ही हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और कस्टमर हमारे पास लाइनअप हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ. और वो कब आ सकते हैं? जब रेट को कम किया जाता है, एज पर द रूल्स ऑफ demand in the economics. So it can be disclosed. Example, like item list for rupees 400 and has a discount of 20%. So the price of this one is simple, like 20% discount and additional discount of 10% taken on the previous price. इस बार जो हमारे प्रीवियस प्राइस हैं, प्रीवियस प्राइस मीन्स जितना प्राइस बनता है पहले डिस्काउंट के बाद में, उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट और मिलता है. दैट इज एडिशनल प्राइस. इट इज़ सेम एज, जैसे हमारे कंसाइनमेंट का हम बिजनेस करते हैं, कंसाइनमेंट के अंदर एक डील क्रेडिटर कमीशन होता है, कमीशन के बाद एक कमीशन होता है, एक नॉर्मल कमीशन हो गया, उसके बाद हम एक और कमीशन देते हैं जिसको हम अकाउंट्स की भाषा में डील क्रेडिटर कमीशन कहते हैं. तो इसी तरह से एडिशनल डिस्काउंट इज ऑल्सो लाइक एज डील क्रेडिटर कमीशन विच इज प्रोवाइड और इम्प्लीमेंट टू द फाइनल आइटम्स आफ्टर डिडक्टिंग फर्स्ट डिस्काउंट. लाइक इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल, एन आइटम लिस्ट फॉर 400, लिस्ट प्राइस 400 रुपीज़ है, हैज़ ए डिस्काउंट ऑफ 20%. तो पहले हम क्या करेंगे, 400 से 20% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू 80 रुपीज़. तो 400 माइनस 80 रुपीज़ करेंगे. अब आपका प्रोडक्ट जो है 320 रुपीज़ का हो गया. बट वी हैव ऑल्सो अलाउड 10% डिस्काउंट, कि भाई और 10% हम आपको दे देते हैं इफ़ यू वांट टू और इफ़ यू एबल टू परचेज दैट. सो द नेक्स्ट डिस्काउंट इज 320 मल्टीप्लाई 10% विच इज इक्वल टू 32 रुपीज़, 32 रुपये आपका आ गया. अब हम क्या करेंगे, नेट प्राइस निकालने के लिए 320 रुपये में से 32 रुपये को माइनस कर देंगे और जो लास्ट प्राइस आपका होगा, फाइनल प्राइस, सेल प्राइस होगा, वो आपका 288 रुपीज़ होगा. एंड नाउ एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज टेकन ऑन द प्रीवियस प्राइस. अब प्रीवियस प्राइस पर 5% हम और देते हैं कि कोई बात नहीं, सीरीज ऑफ हो गया कि 20% हमने ट्रेड दे दिया, 10% हम आपको इनसे एडिशनल दे रहे हैं, एंड और एडिशनल 5% देते हैं. तो विच इज इक्वल टू द प्रीवियस प्राइस इज 288 मल्टीप्लाई 0.05%, द डिस्काउंट इज 14.40. 288 रुपये में से 14 रुपये 40 पैसे हमें और कम करने हैं क्योंकि हमने एक और डिस्काउंट तीसरे टर्म में दिया है. अब आपके प्राइस हो जाते हैं 273.60, यानी 273 रुपये 60 पैसे.
ये आपका फाइनल प्राइस होगा जब आप 3 सीरीज के डिस्काउंट से पास आउट होंगे। एंड नाउ कैन यू ऐड द डिस्काउंट टुगेदर एंड अप्लाई इट एज वन? If the item has 3 discount of 20%, 10% and 5%, can you add them together and apply a 35% discount? No, because reason क्या है कि 35% डिस्काउंट, जैसे फर्स्ट डिस्काउंट का रूल क्या है कि ये आपका लिस्ट प्राइस पर चार्ज किया जाएगा। सेकंड जो है वो आफ्टर डिडक्टिंग द फर्स्ट डिस्काउंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। उसके बाद 10% डिडक्ट करने के बाद में तीसरा किया जाएगा तो रेट और कम हो जाएगा। इसलिए जो है हम इकट्ठा नहीं लगा सकते। अब फ़र्क कितना आता है? बिकॉज ईच टाइम यू अप्लाई द एडिशनल डिस्काउंट द बेस बिकम्स स्मॉलर। हर बार आपका इस बेस जो है स्मॉलर होता चला जाता है, और जब स्मॉलर होता चला जाएगा तो आपका जो है प्राइस ऑफ डिस्काउंट इज ऑल्सो स्मॉलर और रिड्यूसिंग। So directly applying a 35% discount would result in a final price of ₹260। इसमें आपका जो है 260 रुपये का डिस्काउंट होता है, 260 रुपये का फाइनल प्राइस आता है। जबकि पिछली स्लाइड्स में हम देखें तो आपका रेट जो है 273.60 फाइनल प्राइस था। तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो सेलर का होता है अगर हम इसको इस तरह से कोट करते हैं तो। And next is to find the net decimal equivalent of a trade discount series. Find the net decimal equivalent multiplying the decimal form of the complement of each trade discount rate in a series. Yes, it can be possible. And how it is possible? Multiply the list price by the net decimal equivalent, and then it can be cleared by using this example. Like find the net price of an order with the list price of ₹800 and a trade discount in series of 20%, 10% and 5%. So find the complement of each of the trade discount rates. Now they are 0.80, 0.90, 0.95. Multiplying them together, it will become the 0.684. So apply the net decimal equivalent to the list price, like NP equal to 0.684 multiply 800, which is equal to 547.20. And second example is that a tool set list for ₹325 and has a trade discount series of 20%, 10% and 10%. Find the net price. At first, to calculating this one, you can find out the complement. The first complement is 80%, next is 90%, next is 90%. If you are multiplying all these three and then the sum is multiplied by ₹325, then you will get ₹210.60, यानी 210 रुपये 60 पैसे आपको मिलेंगे। इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल से और आप क्लियर कर सकते हैं। एक ड्रेस शर्ट लिस्ट फॉर 125 है एंड हैज ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ सीरीज 15%, 10% एंड 7.5% है। फाइंड द नेट प्राइस। तो इसमें हम क्या करेंगे? कंप्लीमेंट निकाला हमने, पहले कंप्लीमेंट कैलकुलेट किया तो फर्स्ट कंप्लीमेंट विल बी 85 यानी 0.85। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? 100 minus 15, 0.85. Next is 100 minus 90, 0.90, and next is 100 minus 7.5, which equal to 92.5. And multiplying all these three, then you will get the sum, which is multiply once again to ₹125 to get the final price, which is equal to 88.45. To find the trade discount by applying a trade discount series and using single discount equivalent, find the single discount equivalent by subtracting the net decimal equivalent from 1, then multiply the list price by the single discount equivalent, then TD, trade discount equal to single discount equivalent multiply list price. So it can be understand by the definition or key terms. The complement of the net decimal equivalent
It is the decimal equivalent of a single discount rate that is equal to the series of discount rate. Next one, total amount of a series of discounts which equal to single discount equivalent multiply list price. Next one, net amount you pay, net decimal equivalent multiply list price. Then use the single discount equivalent to calculate the trade discount on a rupees 3200 loan tractor with a discount series of 30, 20 and 10. So it can be calculated as the equivalent, first equivalent is 100 minus 30.70, second is 100 minus 0.20 equal to 0.80, then 1 minus 0.10 which equal to 0.90 and multiplying all these three which equal to 0.504 and it is multiplied to rupees 3200 to getting the net value. Which is equal to 1587.20. That means अब 0.496% का मतलब क्या हुआ कि 49.6% आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है. अगर आप सिंपली इसको ऐड करते हैं तो ये जो है आपका ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा कितना होगा कि अबाउट 60% डिस्काउंट आपको दिखेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें आपका टोटल डिस्काउंट जो होगा वो 49.6% होगा. And the trade discount on the tractor is rupees 1587.20. That is the amount that you do not pay. ये आपको पे नहीं करना है. And that is also known as economy in terms of finance and economics also. So cash discount in sales terms. Find the cash discount and the net amount using ordinary dating terms. Interpret and apply EOM terms. Interpret and apply ROG terms. Find the amount credited and the outstanding balance from partial payment. Interpret freight terms. Find the cash discount and the net amount. Bills are often due with 30 days from the date of the invoice. To encourage prompt payment, companies offer an incentive of cash discount if the invoice is paid within a specified period. हम क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के लिए कि प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट लेने के लिए हम इसमें प्रलोभन देते हैं कि अगर सपोज आपको किसी से 100 रुपये लेने हैं, 1 महीने बाद आपको वो 100 रुपये देगा और आज आपने कहा कि भाई अगर आप मुझे 90 रुपीज़ पे कर देते हैं तो आपका फुल सेटलमेंट हो जाएगा. दैट मीन्स 10% डिस्काउंट हम जल्दी पेमेंट लेने के लिए दे रहे हैं, तो ये आपका प्रॉम्प्ट पेमेंट हुआ. प्रॉम्प्ट पेमेंट इनकरेज करने के लिए हम जो है कैश डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो ऑफ़र किया जाता है वो कब किया जाता है, जब हम ह्यूज क्वांटिटी या बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है. 2/10 और N/30 मीन्स टेक ए 2% कैश डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 डेज. पे द नेट प्राइस इफ कवर्ड विद इन 30 डेज. 2/10 का रूल हम मोस्ट प्रोबेबली लगाते हैं कि 10 दिन पहले अगर पैसे मिल जाते हैं तो आप 2% डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं. फाइंड द कैश डिस्काउंट फॉर एन इनवॉइस डेटेड December 1 for 1500 with terms of 2/10 N/30. If the invoice is paid on December 9th, for example, the payment would include the discount and the amount would be rupees 1470. If the invoice is paid on after 11th December, amount to be paid be 1500. Any plants has received an invoice. Try these example. Okay, any plants has received an invoice for rupees 450 for plotting soil dated November 3 with terms of 5/10 N/30. If the invoice is paid on November 12, how much would any pay? It is equal to 427.50. This is equal to 450 multiply 0.95. What if the bill is paid on November 30?
they would not be able to take the discount and would have to pay the full amount of rupees 450. To calculate the exact number of days for a cash discount, you must know how many days are in each month. So if you are not sure, learn them. There are 2 tips in the text to help you. Using a chart is usually, and for example, an invoice of rupees 500 which read 2 by 10 and 30 tells you that a discount of 2% is available if the payment is made within 10 days. To calculate the net amount directly, use the complement of the discount. In this case, 0.98, that means 1 minus 0.02 is deducted and multiply it by the total amount, which is equal to 500. So you can calculate the total amount payable is rupees 500 multiply 0.98, which is equal to 490. Net amount payable or paid. And now try this example also. Syncamore Enterprises received a rupees 1248 bill for computer supplies dated September 2 with sales terms of 2 by 10, 1 by 15 and by 30. A 5% penalty is charged after 30 days. Find the amount due for the following dates: September 12, September 15, October 1 and October 3. So September 12 2% discount, which is equal to 1248 multiply 0.98 equal to 1223.04. September 15 means you have applied 1% discount. So 1248 multiply 0.99 which equal to 1235.52. Then October 1, no discount, you have able to pay full amount. Then October 3, that means 5% पेनल्टी के ऊपर हम जो है चार्ज लेंगे. इस बार डिस्काउंट नहीं है बल्कि प्रीमियम हमें मिलेगा, पेनल्टी ऐड की जाएगी. एंड विच इज इक्वल टू 1248 मल्टीप्लाई 1.05 विच इज इक्वल टू 1310.40. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डिस्काउंट में हम 1 में से माइनस कर रहे थे और लेकिन जैसे ही पेनल्टी का टर्म आया हमने 1 प्लस परसेंटेज ऑफ द पेनल्टी को ऐड कर दिया टू कैलकुलेट फाइनल अमाउंट. एंड नाउ EOM end of month terms. Another type of sales terms are EOM term. For example, an invoice might be 2 by 10 EOM, meaning that a 2% discount is allowed if the bill is paid during the first month or up until 10 days of the month after the month on the date of invoice. If the invoice is dated November 19, then the 2% discount is allowed up to and including December 10. An invoice dated March 4 with terms of 3 by 15 EOM would mean that a 3% discount would be applicable until April 15. An invoice dated August 25 with terms of 5 by 10 EOM would mean that a 5% discount would be applicable until September 10. An invoice dated December 2 with term of 2 by 20 EOM would mean that a 2% discount would be applicable until January 20. So, an exception occurs when the invoice is dated on or after the 26th of the month. The discount would be applicable until the specified day of the month following the month of the invoice. Example, an invoice dated April 27 with term of 3 by 10 EOM would be eligible for the discount if the bill is paid on or before June 10. A cash discount is allowed when the bill is paid within the specified number of days from the receipt of goods, not from the date of the invoice. Multiply the invoice amount times the complement of the discount rate. Sales term stating 1 by 10 ROG means that 1% discount is applicable
10 days after the goods are received, not when the invoice is dated. Try to solve this example. Judy Fine Jewelry received an invoice for 50 silver charm bracelet for a total of rupees 550. The invoice is dated April 1st. She received the bracelets on April 6. If the term are 3 by 10 ROG and the invoice is paid on April 11, how much will she pay? That means within 10 days, she avail the discount of 33% and the total amount she will pay 550 multiply 0.97. That means the discount को पहले माइनस कर देंगे 1 minus 0.03 which is equal to 0.97, and so the final price she will pay rupees 550 multiply 0.97. Partial payment. A payment which does not equal the full amount of the invoice less any cash discount. Partial discount, a cash discount applied only to the amount of the partial payment but not the total. मान लो किसी के पास 1000 रुपये हैं और हम जो है 500 रुपये लेने के लिए उसको 2% डिस्काउंट देते हैं, या 2% डिस्काउंट का हमने ऑर्डर किया और उसने जो है हमें 2% डिस्काउंट यानी 10 रुपये माइनस करके 490 रुपये दे दिए, तो दैट मीन्स उसके जो पहले पेमेंट दिया कैश डिस्काउंट उसी पर एप्लीकेबल होगा, रेस्ट ऑफ 500 पर कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा. Amount credited, the sum of the partial payment and the partial discount. Outstanding balance, the invoice amount minus the amount credited is known as outstanding balance, that is payable by the buyers at a specified time. Applying the percentage formula. In applying the percentage formula to find the amount credited, the rate is the complement of the discount rate, the percentage is the partial payment and the amount credited is the base. So B equal to P upon R. Sometimes a customer cannot pay the entire amount of an invoice but takes advantage of a discount period to apply that discount to a part of the total due. If Sumer's Corporation received rupees 875 invoice with terms of 3 by 10 and by 30 and could not pay the full amount within 10 days, but choose to send a rupees 500 partial payment on day 5, what amount was credited to their amount? B. Amount credited equal to partial payment divided by R, यानी complement of the discount rate. So 500 divided by 0.97 which is equal to 515.46, and the rest amount is 875 minus 515.46 which is equal to 359.54 is the balance price or balance amount which is payable by the Sumer's Corporation. And now bill of lading. With shipping documents that include a descriptions of the merchandise, the number of pieces, weight, name of the consignee, sender, destination and method of the payment of the freight charges, which is called bill of lading. It is most important documents. ये बहुत important documents होता है bill of lading, जो हमारे फॉरेन मार्केट के लिए एप्लीकेबल होता है. इसी तरह से हमारी FOB शिपिंग पॉइंट होता है. फ्री ऑन बोर्ड, FOB की जो फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड होती है, यानी बायर्स पे फॉर शिपिंग व्हेन शिपमेंट इज रिसीव्ड. फ्रेट कलेक्ट, द बायर पेज द शिपिंग व्हेन द शिपिंग इज रिसीव्ड. एंड मोर की टर्म. FOB डेस्टिनेशन, फ्री ऑन बोर्ड एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, द सेलर पेज द शिपिंग व्हेन द मर्चेंडाइज इज शिप्ड. Freight paid, the seller pays the shipping when the merchandise is shipped. Prepay and add, the seller pays the shipping when the merchandise is shipped, but the shipping costs are added to the invoice for the buyer to pay. Remember that cash discount do not apply to shipping cost.
The home doctor received a shipment of hand tools with an invoice total of rupees 800 including shipping and sales terms of 3 by 10 and by 30. The invoice is added. Invoice is dated June 2 and the shipping cost are rupees 125. Calculate the payment of the invoice if it is paid on June 10. So subtract the shipping charges 800 minus 125 which is equal to 675 and applying the discount situation 3 by 10, that means 3% over 10 days. So 1 minus 0.03 which is equal to complementary is calculated as 0.97 and 0.97 multiply the rest of the amount which is equal to 675. So the net amount payable 654.75. Add the shipping charges back. इसके बाद हम शिपिंग चार्जेज को बैक करेंगे, वापस कर देंगे, दैट मीन्स ऐड कर देंगे. सो नेट अमाउंट पेबल 654.75 प्लस 125. द टोटल अमाउंट पेड बाय द डॉक्टर इक्वल टू 779.75. And now do some questions. What do you mean by trade discount series? And second question, how do you interpret and apply EOM, that means end of month concept? And that's it from my side, and thank you for the session 3rd.